Ladies and gentlemen, tonight on the News Hour, we bring to you a mega Times Now impact. Times Now has over the past week exposed the alleged abuse of power by Waqf boards across the country to grab land. From Tamil Nadu to Delhi to Uttar Pradesh, we exposed how the Waqf board usurped properties in the garb of legality and rights. After Times Now's expose, the Yogi Sarkar in Uttar Pradesh has decided to bring the truth to the fore. It has ordered a thorough survey of all Waqf land to identify Waqf properties that have been acquired by flouting the rules. This order means that the 1989 order under the N.D. Tiwari Congress government, which paved the way to transfer all barren land as Waqf property, stands cancelled. The UP government has ordered that all properties registered under the 1989 order need to be probed in this survey as well. The lobby that raised doubts on the UP government's Madarsa survey is back in action, attacking the BJP. The AIMIM, the Congress Party, the Samajwadi Party have all upped the ante against the Yogi Sarkar, injecting a communal spin. While Asaduddin Owaisi alleged that the BJP is trying to grab Waqf properties, his party leader Asim Bakar called the survey a big NRC. Listen in to these comments yourself. वक्फ प्रॉपर्टीज को आप छीनना चाह रहे, ये आपका असल इंटेंशन है, तो इमीडिएटली आप इस ऑर्डर को विड्रॉ करना चाहिए यूपी सरकार को, योगी सरकार को, और आपका इंटेंशन ये है कि वक्फ प्रॉपर्टीज को छीन लिया जाए। आपको इख्तियार ही नहीं है ये करने का, ये गलत काम आप कर रहे हैं। कि अभी तक तो आप ये कहा जा रहा था छोटी एनआरसी, लेकिन अब आप तैयारी में है बड़ी एनआरसी की। सच्चाई ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं। सर्वे के खिलाफ हैं, सर्वे नहीं होना चाहिए और इस सरकार को केवल हिंदू मुस्लिम में उलझाना है। जो लोग दावा करते हैं $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की, ये बताएं कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी क्या मदरसों में सर्वे होने से हो जाएगी? उत्तर प्रदेश सरकार बेरोजगारी पे नहीं बोल रही, महंगाई पे नहीं बोल रही विधानसभा में। अब कभी मदरसा, कभी वक्फ बोर्ड, मेरा सिर्फ इतना कहना है। भाई ये तो तरह तरह से ऐसे मसले उखाड़ कर ला रहे हैं कि जिससे कि आने वाला इलेक्शन जो सन 24 में है उससे की तरफ तवज्जो न के इसमें उलझा दें हमें अपने मसाइल में। अभी मदरसों का मामला था, सब लोगों ने मैंने कि घबराओ मत। The BJP has hit right back at the opposition and said that the opposition is only trying to instill fear in the minds of the people, and their claims that the BJP is creating a Hindu-Muslim rift are unfounded and completely baseless. जितने भी मदरसे के संचालक हैं और जो बड़े बड़े धर्मगुरु हैं, सबने इसको सराहना की है कि इसको होने से हम लोग रेगुलराइज होंगे और बच्चों को पढ़ाई करने के और अवसर मिलेंगे, सुविधाएं मिलेंगी और सरकार पूरी तरह से प्रदेश के सभी बच्चों की उच्च कोटि की शिक्षा प्रदान करने के प्रतिबद्ध है। इस तरह की जो बातें कर रहे हैं, डराने की बात, लोगों को गुमराह करने की बात, वो वक्फ माफियाओं के संरक्षण के लिए कर रहे हैं, आम लोगों के लिए नहीं। जो ओवैसी साहब हैं वो मजे हुए नेता हैं, मत सांप्रदायिक नेता हैं, और वो जानते हैं कि इससे जो तालीम मिलेगी और वक्त का जो अधिकार है वो कम होएगा, तो उसको वो रखना चाहते हैं क्योंकि उनकी राजनीति वहीं से होती है। और जो फायदा है मदरसा का सर्वे से और जो वक्त से जो राजस्व विभाग को जो फायदा है, उन दोनों को वो नुकसान देना चाहते हैं। So the legitimate question we are asking on the News Hour tonight, is this all a smoke screen by the opposition to shield Waqf illegality? That's the question and that's the debate. Yogi Waqf status check, that's the hashtag and the debate coming up on the other side. You're watching the News Hour at 9, debate number 1 on Times Now, Super Prime Time.
Joining me tonight on the debate, Dr. Kaushal Kant, spokesperson of the UP BJP, Abhijit Iyer Mitra, political analyst, Ishkaran Bhandari, advocate, Tehseen Poonawalla, political analyst, supports the Congress party, Soumya Rana, spokesperson of the Samajwadi Party, Haziq Khan, Islamic scholar. But my first question goes to Dr. Pawan Rao Ambedkar, national spokesperson of the AIMIM. Dr. Pawan Rao Ambedkar, itna dar kyun? Survey is a survey. There's no problem. There's no Hindu, there's no Muslim. There's just a survey, and surveys are ordained under the 1995 Act, Section 4.6. You can just go and read it, and it states very clearly that every 10 years there should be a survey. So what's the big deal? And also, the Joint Parliamentary Committee in Rajya Sabha has given a report that there should be a survey every 10 years. So if the state government is following parliamentary and legislative procedures, where is the problem? Thank you, ma'am Navika, and good evening to all the panelists. I just want to tell you, if I have to stand either with the faith or rule of law, I will stand with the rule of law. The reason is that, as you told, there will be a survey after 10 years. I just want to tell you, this order of survey of the Waqf property is totally illegal. The reason is that the Section 4 of the Waqf Act 1995 said regarding the survey of the Waqf properties under the compliance of the Section 4.3 A, B, C, D, E, F. There are the 6 subsections under which the government can go for the survey. That's why we are telling this government order is totally illegal. Now the second question, what will the government want to get after this survey? Whether they are going to develop some new things, develop the educational institutions. हिंदी में एक कहावत है, सबसे पहले जो आपके पास है ना, पहले उसे सुधार लीजिए. आपके पास उत्तर प्रदेश में you don't have the good education qualities institutes. First of all, you have to look after that. आप वक्फ की प्रॉपर्टी को क्या करेंगे? Once the वक्फ property is always the वक्फ property. You are telling about the government order of 1989, which was passed by the Narayan Dutt Tiwari's government. Whether that order was illegal? First of all, question this answer. And the second one is there that under that order, all the lands which are usars, which are barren lands, which are the bhitas, which was registered under the Waqf property, that property is a Waqf property. The government cannot attach that property. The government cannot possess that property. If the government attach or possess that property, Dr. Ambedkar, let me ask you, has the government order, has the Yogi government's order said anything about attaching any Waqf property? Has it said that the Waqf property is illegal? It has only called for a survey. Now, I want to ask you, what is the percentage of the Muslims in this country? And what is the percentage of the Waqf board land that they own? Okay. Why don't you answer that question? Yes. Waqf board is the third biggest owner of land in this country after railways and defense. Okay, right, ma'am. I just want to give the answer of this question. Do you have any list or any data of the mutts? How much land they have possessed? I have the list of more than 100 mutts. I am with you. If there are illegal mutts and temples and trusts, we should go after them. But that is not the topic of debate today. The topic of debate is survey होना चाहिए या नहीं, और survey से दिक्कत क्या है ये बता दीजिए. Why are you criticizing? Why are you calling it an NRC? That is my pointed question. Why are you going all over the countryside? Yes. What are the points of survey points? Do you have the list of survey points? You don't have the list of the survey points. The government will make it. The government will make it. Today it has ordered a survey. आपको आज से आपने survey points नहीं देखे, आपको आज से problem है. So let me get in Dr. Kaushal Kant. I want to ask you, how is the Muslim community, which is a minority community, how is it possible that it owns the third largest land tract of this country after railways and defense?
And if there is a survey which is mandated under the law, what is their problem if such a survey is carried out by the state government of Uttar Pradesh and other state governments which should also follow the same mandate in the law? नाविका जी, देखिए, जो आपने सवाल पूछा कि इसके पास थर्ड प्रॉपर्टी क्यों है, जब नेहरू लियाकत का समझौता हुआ था उस समय कुछ मुस्लिम जो भारत देश को छोड़ करके पाकिस्तान चले गए थे, और पाकिस्तान में क्या हुआ, हिंदुओं की जमीन को मुस्लिम्स को दे दिया गया। यहां पर जो मुसलमान चले गए थे वो जमीन सरकार ने मुस्लिम्स को दे दिया, जबकि हिंदुओं को देनी चाहिए थी। लेकिन जो भी हुआ, खैर, उसको भूल जाते हैं। अभी जो हमारी सरकार का काम है, कैसे भूल जाते हैं? क्या नारा था? I come from a partition family, sir. Our families lost their land there and they lived as refugees in this country. भूलना आसान नहीं है। नाविका जी, अगर मैं उस टॉपिक पे जाऊंगा तो हम टॉपिक से हट जाएंगे, अदरवाइज मैं उस पे भी डिस्कशन कर सकता हूं। अभी इस टॉपिक की बात करते हैं। आप देखिए, वक्फ के पास तीसरे नंबर की हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रॉपर्टी है, लेकिन अगर हम कहें यतीम खाने कितने हैं, तो यतीम खाने का पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1000 से भी कम है, डेटा चेक किया जा सकता है। जबकि जो इनके पास प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी करीब 12 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी है, जिसमें से करीब 8.5 लाख प्रॉपर्टी है। इतनी बड़ी प्रॉपर्टीज है। और जो हमारे कलवे जब्बार साहब का कहना है कि 70% प्रॉपर्टी के ऊपर केवल अवैध कब्जा है। तो अगर ऐसा फैक्ट है हमारे पास, तो जांच होने में कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लगती है, क्योंकि हमारी सरकार जब लाभार्थी योजना बनाती है, जब मकान देती है, जब बिजली देती है, जब 17 करोड़ लोगों को खाना दे रही, तो वो जाति धर्म दे के नहीं दे रही है। तो अगर कोई करप्शन हो रहा है और हमें दिख रहा है, तो हमें उसमें जांच करने में कोई समस्या नहीं है। अगर कोई भी आदमी जो सही है और सच्चा है, उसे जांच से घबराना नहीं चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है कि ये वही लोग हैं, हमेशा वही लोग सामने आपको पोजीशन नजर आएंगे जो हिजाब का विरोध करेंगे, जो सीए का विरोध करेंगे, जो हर वो चीज जो हिंदुस्तान के इंटीग्रेशन को, हर आदमी नागरिक की सुविधा के लिए होती है, उसका विरोध करेंगे। आप देखिए, सुमैया राणा जी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, सुमैया राणा जी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अगर सर्वे हो रहा है and I will tell you the report of the Waqf Council itself, which has submitted a report that 38.2% उनके पास टोटल ओनरशिप है, बाकी 62% of the Waqf board land is actually either disputed or stuck or whatever, they don't have papers for it. In the situation जहां 62% के कागज नहीं है, डिस्प्यूटेड है, तो ये सर्वे अगर उसका हो जाए तो इसमें हिंदू मुस्लिम कहां से आता है, मुझे समझाएंगी जरा? आप म्यूट पे हैं, अनम्यूट करिए। आपकी आवाज नहीं आ रही, माइक ऑन करिए। माइक ऑन कर लीजिए। I think there is a problem with her mic. नाविका जी, do you hear me? जी मैं शुरू करती हूँ जी। इसका मतलब कि भारतीय जनता पार्टी को जिसने सर्वे का शोषण छोड़ा है इस वक्त, उसको ये मालूम है कि बहुत बड़ी धांधल गर्दियां हुई हैं वक्फ बोर्ड में। वक्फ बोर्ड की जमीनों को पहले तो ये तय हो जाए कि वक्फ बोर्ड में प्रॉब्लम है या वक्फ बोर्ड की जमीनों को दूसरे द्वारा जो कब्जा किया गया है बाहर के लोगों द्वारा, वहां पे प्रॉब्लम है, पहली चीज। और दूसरी चीज मैं ये कहना चाहती हूँ कि वक्फ बोर्ड की अपनी जो स्ट्रैटेजी है वो गवर्नमेंट क्यों नहीं क्लियर कर रही है? अगर उन्होंने सर्वे की बात की है तो उस सर्वे से क्या फायदे होने वाले हैं? जो ये गरीब मुसलमानों को और बेरोजगार मुसलमानों की बात कर रहे हैं, तो इन मुसलमानों को किस तरीके से फायदा पहुंचाएगी? और मुझे आप नाविका जी, क्योंकि आप भी एक महिला हैं, मैं आपके सामने एक बात रखना चाहूंगी। 1986 में जब शाहबानो वाला मामला हुआ था, उस समय सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्ट बनाया था, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन लॉ, जिसके तहत तलाकशुदा महिलाओं को उस प्रदेश का वक्फ बोर्ड गुजारा भत्ता देगा। और शायद आपको भी जानकारी होगी कि 1986 से 2022 तक
किसी भी महिला को आज तक गुजारा भत्ता नहीं मिला है। तो आप अगर अच्छा करने निकले थे, आपकी नीयत में खोट नहीं था, तहसीन पूनावाला तो आप देंगे, ये बताइए ना क्योंकि कि वो वाला महिलाओं लॉ को तो गुजारा पलटा भत्ता था नहीं इनकी देगी वक्फ सरकार बोर्ड। ने, उस लॉ को तो पलट दिया था इन्होंने। तो बताइए बताइए, आज तक कुछ नहीं हुआ। दूसरी बात तहसीन पूनावाला, मुद्दा यह भी है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह, द देन प्राइम मिनिस्टर, in 2012 said that there is so much Waqf property that they can actually earn 12,000 crore rupees a year. And how much do they actually earn? 163. So I want to ask, in the name of appeasement, in the name of Sachar committee, why were these issues not looked at? Why was rights not given to the ordinary Muslims, and why was this only used as a vote bank? And today the same vote bank rakshaks are calling this a Hindu-Muslim ka mamla. Fantastic questions, very good, and thank you for having me on the show. So let me clarify each of this, because a lot of it is being spoken, a lot of it surround sound, that like it always goes, none of it of any substance, especially from the Bharatiya Jalao Party or the BJP. Let's come to each one specifically. First, for the Bharat Jalao Party or the BJP. कुसुम पाठक ने जमीन बेची रवि तिवारी को 2 करोड़ रुपए में, कौन से? राम जन्मभूमि ट्रस्ट के लिए जमीन, जो फिर खरीदा गया 18 करोड़ में। वहां कौन सी जांच कराई आपने? वहां क्यों जांच नहीं कराई? वहां तो आपके मेहर चंदा आए, मनी कम, नो जांच। उसकी भी जांच हो रही है। प्लीज डोंट इंटरप्ट मी, कांट साहब, डोंट इंटरप्ट मी प्लीज। डॉक्टर साहब, आई रिस्पेक्ट यू अ लॉट। नंबर 2, if you want to do a survey, I am with you. Tell us the parameters of the survey. अरे बच्चा पैदा नहीं हुआ, मुंडन की पार्टी किस हलवाई से मिठाई की उसकी आप बात कर रहे हो? अरे पहला बच्चा तो पैदा करो, मुंडन और हलवाई को बाद में लाओ। अरे उसका पैरामीटर्स क्या है सर्वे का? सर्वे कुछ नहीं। आज से 10 साल पहले सर्वे हुआ। मैं तो कह रहा हूं कांग्रेस खराब, सपा खराब, बसपा खराब, मोदी जी महान, योगी जी महान। तो जो पहले सर्वे हुए उसके रिजल्ट का क्या हुआ? उस पे आपने कितने केसेस पे एक्शन लिए? उसका तो रिपोर्ट कार्ड रखिए आप असेंबली के सामने, नाविका जी के सामने। उसका कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं। बस आप सिर्फ वक्फ की और ताज की बात इसलिए करना चाहते हो क्योंकि आप आज की बात नहीं करना चाहते हो। एक लास्ट चीज, आप ही के मेंबरान गए थे सुप्रीम कोर्ट परसों, और ऐसी फटकार मिली सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वक्फ बोर्ड के अंदर, यहां आकर कहते हैं हमें गरीब मुसलमानों के लिए हमें कुछ करना है, और सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसे स्ट्राइक डाउन कीजिए, ये ट्राइब्यूनल गलत है, और सुप्रीम कोर्ट से फटकार खाते आते। तो भाजपा हाथी के दांत खाने से फटकार की बात कर रहे हैं। आई विल रीड आउट, एंड दिस इज ओनली डे बिफोर yesterday, the order of the Supreme Court. Correct. I'm not talking about what were the observations. I am not talking about the observations. The order of the Supreme Court is simply list the matter on 18th of October 2022. And what did the Supreme so Court my say? friend, the Supreme Court, it hurts us and it pains us. The Supreme Court has said a lot of things. This petition the hurts Supreme and Court pains has said a lot of things about the Congress party as well. Of course it let's has. all start enlisting so those. At least one be a minute. hypocrite on TV. I'm telling them. यहाँ गरीब मुसलमानों की बात करते हैं, वहां जाते कहते हैं एक्ट को स्ट्राइक डाउन करो। इश्करण भंडारी, ये इतना डर का माहौल क्यों है? ये डरे हुए क्यों हैं इतने? Because let me start very straight away with this. Because madrasa survey will reveal what is happening in madrasas. Waqf board property survey will reveal what is happening in the Waqf board. Let us see. There are 2 categories of laws in India. A Hindu wants to claim his right to a temple which has been brutally destroyed. A law which hits him in the face is Places of Worship Act. A Hindu wants to run his own temple. The laws which hit him in the places, Trusts Act and Endowments Act, in which he can't run his temple. Hindu wants to establish a school. The law which hits him in the face is right to education, in which we know how many Hindu schools have been devastated. Now come to the other side. When a Muslim wants to secure his property, you give him power to direct the district commissioner and the public authorities by making a Waqf Act. When you want to protect his properties, I don't remember a case of a takeover of any other religious institution except a Hindu institution. When it comes to right to education, we know what exceptions have been made in it. So the entire law has been framed. It reminds me of Godfather Don Vito Corleone saying one lawyer with a briefcase can steal more than 100 men with guns. Here we had entire government framing laws to enable benefit to one particular vote bank. And now all that is being done. Let us be very clear. Is a survey of what belongs to you, what doesn't belong to you. Do you have the title? Don't you have the title? And on that there is objection. Let us wait for the survey report to come. Let us see what the government does on the survey report.
as has been the past, the law may only end up benefiting you. That is my fear. That is your fear. Well, let me get in 1 minute. हाजिक खान साहब, जो मुसलमान कंपनियों में काम करते हैं वो इनकम टैक्स देते हैं ना? देते हैं। अच्छा, और आप अगर दुकानों से कोई सामान खरीदते हैं तो उस पे जो जीएसटी लगती है आप देते हैं ना? तो सर्वे अगर होता है तो वो ट्रैक करता है कि भाई सब कागज हैं या नहीं है। इनकम टैक्स के भी तो आप रिटर्न फाइल करते हैं, सर्वे में भी कागज देखने पड़ेंगे और सब आकलन लगाना पड़ेगा कि सब सही है। तो इसमें दिक्कत क्या है? हिंदू मुसलमान कहाँ से? नाविका मैडम, बात यह है कि भारत हमारा संविधान से चलेगा। भारतीय जनता पार्टी बात करती है हिंदुस्तान की, भारतवर्ष की, लेकिन इस संविधान के खिलाफ काम करती है। मैं कहता हूं संविधान में तो लिखा है कि हर 10 साल में सर्वे होगा। 1995 में जब ये एक्ट बना था तो हिंदुस्तान के, मेरी बात कहने दें, पूरे हिंदुस्तान की सारी पार्टियों के लोग मौजूद थे उस पार्लियामेंट में। अटल बिहारी वाजपेयी भी थे, अडवाणी जी भी थे। एक्ट बना। अब ये प्रॉपर्टियां जो लोग बैठ के कह रहे हैं कि ये मुसलमानों ने पाकिस्तान चले गए, उन्होंने 1947 से पहले जो जमींदार थे, जिनकी औलाद नहीं थी, जो चाहते थे कि हम नेक काम करें, उन्होंने सारों ने वक्फ प्रॉपर्टी करी। रही आप हरियाणा, दिल्ली यहाँ से आप मिलेनियम पार्क से चलेंगे और जितना डीपीएस स्कूल है वहां तक चलेंगे, पुरानी दिल्ली तक, ये सब वक्फ प्रॉपर्टी है। हरियाणा में तमाम वक्फ प्रॉपर्टी मुसलमान छोड़ के, जमींदार हरियाणा में मुसलमानों का था। पंजाब में तमाम प्रॉपर्टी, तमाम मस्जिद के अंदर चल रहे हैं, होटल चल रहे हैं, हॉस्पिटल चल रहे हैं, स्कूल चल रहे हैं मस्जिदों के अंदर। मैं ये कह रहा हूं कि सर्वे पे किसी को एतराज नहीं है। एतराज ये है कि आप 8 साल में आपने मुसलमानों के लिए एजुकेशन पे क्या काम किया, आपने मुसलमानों के इलाकों में हॉस्पिटल कितने बनाए। आप मुसलमान प्रॉपर्टी की मदरसों के सर्वे कराने से उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को और हिंदुओं को 1 रुपए का फायदा नहीं होगा। आपका काम, ये जिम्मेदारी थी कि आप सर्वे कीजिए। एक मिनट, मेरा सवाल सुनिए। आपको जब कोविड होता है तो वो हिंदू कोविड होता है कि मुसलमान कोविड होता है? नहीं, मुझे बताइए कौन सा कोविड होता है? अगर बुखार आता है तो हिंदू बुखार आता है कि मुसलमान आता है कि सिख आता है कि बौद्ध आता है? ये भी हमारी भारतीय जनता पार्टी ने करा। मुझे बताइए। अरे भाई, जो हॉस्पिटल बजा के दीपक जला के आपने भी दिखाया, वो उन्होंने करा कि ये कोरोना को बहरा कर दिया, अंधा कर दिया और 45-50 लाख लोग हिंदुस्तान में मर गए। लोगों की लाशों को कुत्तों ने खचेड़ के कर दिया। ये पहली बार हुआ हिंदुस्तान में, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। आप मेडिसिन दे नहीं सके, आप हॉस्पिटल दे नहीं सके, आप ऑक्सीजन दे नहीं सके, और आपने हिंदुओं के, हमारे बुजुर्गों के कुत्तों से नुचवा दिए। ये उद्देश्य में हुआ आपकी सरकार में। क्या बात कर रहे हैं आप हाजिक खान साहब? आप क्या बात कर रहे हैं? आप देश के, आई वांट टू गेट इन अभिजीत अय्यर मित्रा। There are hospitals for Hindus and Muslims. Just like the virus in this country that comes doesn't have a religion, hospitals don't have a religion. Why do they always speak in the terminology of आपने हमारे एरिया में क्या किया? अरे I will show you. अमानतुल्लाह खान क्या है? दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है। उन्होंने दिल्ली वक्फ बोर्ड का जो प्रॉपर्टी था, जहां पर स्कूल चल रहा था, प्राइमरी स्कूल, उस स्कूल को गिराकर वहां पर बना दिए दुकानें। वहां तो आपकी जबान नहीं खुली, वहां तो जबान नहीं खुली ना आपकी। लेकिन आज अस्पताल के नामों पर आप कह रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं, विरोध करेंगे आप विरोध करने के इंतजार नहीं कर रहा देश, हमने दिखा दिया है। और वो क्या लैंड ग्रैब हो रहा था? अभिजीत अय्यर मित्रा, why is everything in this country being made Hindu Muslim? It is only a survey, and a survey is mandated under the law, by the legislation, by the Joint Parliamentary Committee report. Where is the problem that the Samajwadi Party and the AIMIM see this as a chota or a bada NRC? So see, the problem here, Navika, has always been that there have been special exceptions in the law carved out for certain communities at certain points of time by certain governments. And this has been done predominantly for vote bank politics, right? Now, it is very curious that the same people who want equality under the law also want special exceptions in the law when it comes to property. So if you look at jurisprudence in this country, property jurisprudence in this country, the Waqf Act, the various Waqf Acts by various governments are the only real exception to that jurisprudence. Why is that? They are perfectly fine with it, but they want equality in everything else. Now let's see where this particular controversy started off.
It started off in Bangalore, where somebody wanted to hold a Hindu religious event at a Eidgah Maidan. The Waqf said it was its property, it will not allow them to hold it. Yet you remember in Noida, was it Noida or Gurgaon? I think it was Noida, where it was happening last year or the year before last. Despite being the third biggest property owner in India, Muslims in Noida only wanted public grounds to go about worshipping in. Okay. The second thing that happened is what just happened in Tamil Nadu, precisely because of the lack of even jurisprudence in the application of these laws, wherein where the Tamil Nadu Waqf Board decided a whole temple and a whole village are theirs. Right? Where is equality before the law here? Technically, the same people here asking for equality of the law should also ask for equality under property demonstration, property proof and things like that. They will not. Now, what is the second part of all of this? The principle behind this is what is mine, what is yours is negotiable. But let's come to Dr. Ambedkar's logic in all of this. And something that somebody else also said, which is, India has so much poverty, this, that, why are you going after property, fix your schools? Guess what? The Sunni community is the single most depressed community in India, despite being the third biggest landowner in India. All right? They should then focus instead on building schools and things, instead of property, which is of highly disputable ownership. The third thing I want to point out here is the opposition isn't to any seizing of land or anything. It is a mere investigative process into the legality of the acquisition. Even that for them is problematic because according to them, they are above the law and therefore no legal process of investigation must be applied to them. Fourth, understand why is a special investigation being carried out here? Because several people on your panel have asked this. Why is a special investigative process being carried out? I think Dr. Ambedkar brought up mutt lands and things like that. Hindu property law, there is no special Hindu religious endowment property law. There is no automaticity in that law. Whereas here, it seems that a lot of the land, or maybe not, may have been acquired through this special carving of jurisprudence specifically for one community. And therefore, when you have legal exceptions, then you have special investigations. It's that simple. Extra privileges bring exactly, Dr. Ambedkar. It's really that simple. Under the Hindu Religion Endowment Act, there is no way that they can put a finger on any property and take that property or that land into their notice. And I want to ask you, where is the answer for villages after villages being taken over by the Waqf in Tamil Nadu? Yes. I just want to answer. If you want to talk about the equality, then you have to talk about in context of the Uttar Pradesh. You have to talk about the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Revenue Act 1950. And you have to talk about the Land Revenue Act 1901. Yeah. Why are you not talking about this? Waqf property is different from the UP Land Revenue Act 1950. Two lands are totally different. Then why are you talking about the merging these two different act lands properties in the same way? Waqf property is a very different property, which is, I just want to tell you the statement of that. No. In you may give any definition. The Waqf Act is clear that there should be a survey every 10 years. Do you agree with that? Yes or no? Do you agree with that? Yes or no? I just want to show you one thing. There is an act in 1913. It's a Waqf Validating Act, saved the institutions of Waqf in India. This is the main act. Why are you talking about that? Why are you connecting the my land dear friend, under the that was an act of the British rule. We are an independent country now. If you didn't notice, let me inform that to you. Okay. And number two, let me ask you, is it not true, according to the Waqf board notifications and reports that they've given, that only 38.2% of the Waqf properties have documentation? 62% don't have it. 62% don't have it. Yes or no? It is a statistics given by the Waqf board. Do you agree with that? Ishkaran Bhandari तमाम ये कागजात दिखाने लग जाएंगे. कागजात
जिन कागजात का इस मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है वो दिखाने लग जाएंगे, लेकिन जो कागजात मांगे जा रहे हैं वो नहीं दिखाएंगे। कागज को आप नाविका जी, सारी बहस, कैन आई आंसर? सारी बहस कागज की है। आप कागज दिखा दीजिएगा कि प्रॉपर्टी वक्फ की है, ऐसे वक्फ की बनी, ऐसे टाइटल आया, बात वहीं पे खत्म हो जाएगी। तो कागज की तो सारी बात है। अब मुझे इंटरप्ट मत कीजिए, मुझे बोलने दीजिए। आप प्लीज इंटरप्ट मत कीजिए, मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। ऐसे बहस नहीं हो सकती है, मुझे बोलने दीजिए। My friend, allow him to speak. My friend, allow him to speak, and then you can respond. Yes, Ishkaran. Yes, Ishkaran. Ambedkar ji, hold on. Ceasefire. Hold on. Let him speak, and then I'll come to you. सवाल ये है, जहां जहां जिस कानून में कागज दिखाने की बात आती है, कागज नहीं दिखाएंगे क्यों शुरू हो जाता है? ऐसा क्या छुपाना चाहते हैं? ये पहला कानून तो नहीं है जिसके ऊपर आपत्ति होगी और बोल रहे हैं हम कागज नहीं दिखाएंगे। पर ये योगी सरकार है तो कागज को दिखाने पड़ेंगे। अगर आपकी ओनरशिप है तो आपको उसको दिखाना पड़ेगा। दूसरी बात, आप घबराइए मत, पूरी बात खत्म। आप घबराइए मत, अम्बेडकर जी घबराइए मत, आप पूरी बात सुन लीजिए, आप घबराइए मत। दूसरी बात, नाविका जी, द फॉल्स इक्विवेलेंस व्हिच हैज बीन मेड हियर, लेट मी फिनिश माय पॉइंट। The false equivalence which has been made here. Please tell me how many thousands upon thousands of temples have been taken over by the government, including the land running into lakhs of acres of these individual temples have been taken over, whereas the government gives you special sweeping powers by making Waqf Act to protect your rights and your properties. Manmohan Singh was right. Minorities have the first right on resources. All that is being done now is the survey of those resources. Exactly. What is the problem with the survey, Tehseen Poonawalla, is the only question. The only question is whether or not Waqf land has also been encroached upon will come out in the survey. So why are you presuming कि वक्फ लैंड का सर्वे मतलब लैंड छीनने वाला है? भाई ऐसा क्या किया है कि छीन जाएगा? कागज नहीं है क्या? Okay. Three very important points raised by Ishkaran, who's a fantastic lawyer, and Abhijit Iyer Mitra, who makes fantastic arguments. And I will answer in the words of the Honorable Supreme Court. Ishkaran, to quote the Honorable Supreme Court on the question you raised, I'm quoting the Supreme Court. The Waqf property is a statutory board. The Waqf board is a statutory board, and the property does not vest in the board. They are not the owners. So the question of papers or whatever you claim is the Waqf claim on land is not the duty of the people out there to show the papers. It is the central government. The Waqf is a central act that is claiming the land. So please raise this question with Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, that if he thinks that this act is ultra wise to the constitution as you think or Abhijit thinks, why doesn't the Honorable Prime Minister and his cabinet not strike it down? Ishkaran Bhandari is responding. Ishkaran is responding to you. Ishkaran. Very simple answer. The Waqf Act is A, constitutionally being challenged. B, the second part of it is whosoever claims a property, the only thing which is being done is survey. If you have the title to the property, in whichever manner you got the title, you will show it. There have been allegations like we saw in Delhi where a Waqf land, do you want children's school to be broken and commercial malls being made there? All that will come out in survey. So all that has happened is a survey. Why are you jumping the gun? In fact, in my first comment, I made up. Let me just finish. Last point, 10 seconds. 10 seconds. In my first comment, just 10 seconds. Let me get just 10 seconds. Then I'll answer him. Just 10 seconds. Okay, you in my first comment, I say, as has been the history, if it was not Yogi government, the survey may go in their favor. That has been the history of India. Let us see what the Yogi government does. So let us wait for the survey. Okay, I'll answer that, Ishkaran. Because as per Section 4 of the Act, a survey should take place, but with a reference of the survey. That reference has not been put out. When it will come out? It will come out. We are going to go to a restaurant, but I don't know what restaurant. Abhijit Iyer Mitra. Abhijit Iyer Mitra. 1 minute. Abhijit Iyer Mitra. They are talking about the reference. The terms of reference will come. It always comes after the decision. What is the problem? Every notification is made and then the terms of reference follow. What is the rocket science that is being questioned here? I want to ask you. Right. Exactly right. Now, Tehseen has made an important point that the Waqf is a mandatory constitutional body, fine, constitutionally recognized body, and therefore there are certain norms that apply to it. Now, the point here is, constitutional body or not, tell me one government organization that owns land
that doesn't have to produce proof when it is asked to produce proof if you own the land or not. Armed forces have to, railways have to, everybody has to. So if the land is valid, when the survey दिखाते हैं कि नहीं कागज? रेलवे दिखाते हैं कि नहीं? आप जिस घर में दिखाते हैं कि नहीं? बताइए। मैडम कागज है, जब तो ये रिकॉर्ड है कि इतनी प्रॉपर्टी है। तो बिना कागजों के तो फिर वो अपडेट, अगर वो सर्वे के थ्रू अपडेट हो गए रिकॉर्ड, तो दिक्कत क्या है? हमें कोई दिक्कत, सरकार की बॉडी है वक्फ बोर्ड, सरकार बनाता है, प्रेसिडेंट उसका अध्यक्ष जो बनता है वक्फ बोर्ड का चेयरमैन, वो सरकार बनाती है। योगी जी की सरकार का जो चेयरमैन है, उसको उन्होंने रिपोर्ट क्यों नहीं मांगी? और पिछले साल की जो रिपोर्ट आई अगले के जमाने में मायावती के जमाने में, उस पर क्यों कार्रवाई नहीं की गई? I only want to ask, is there just one kind of fear mongering or the other that the opposition is looking for? A survey is a survey. A survey on land, on properties is done all the time. Why is it becoming a Hindu-Muslim issue? Why don't people in the Muslim community question when schools are demolished and shops are made on that land? Why don't they raise the question on why so many Muslim children, and the statistics are all there, why are there dropouts from school? Why are the education percentages lower than the national average? Why, if there is a third biggest landowner as the Waqf board, then why are there not enough hospitals and schools that have been built on these lands? Why do they earn only 163 crores when the potential of earning 12,000 crores per year exists with the Waqf board? The question is, why have Waqf boards become virtually addas of power and nepotism? Why have they become power play of the rich? What about the poor Muslims? Do they not have rights? That's the question this survey raises. And that's a question that is not comfortable to those who wield power in this community, because then their leadership will be questioned, their sitting vote banks will become intelligent and demand their rights. That is what is the problem for the challenge of this survey. We leave it at that. Thank you very much to all my panelists for joining me on this big debate on